I, Dr. Jita Singh, working as a professor at Jadavindra College of Engineering. Today I will discuss the remaining characteristics of digital IC. Fan in. The number of inputs that the gate has. The number of inputs that the gate has, that is called fan in. For example, in case of TTL 7400 IC, each NAND gate has two input. TTL NAND gate 7400 IC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ NAND gate ਹੁੰਦੇ ਆ 4. ਹਰੇਕ NAND gate ਦੀਆਂ ਦੋ inputs ਹੁੰਦੀਆਂ. So fan in is 2. In case of TTL NAND gate, the fan in is 2. Fan out. The number of standard loads a given gate output. ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਗੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਡਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡੀਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, that is called fan out. The number of standard loads a given gate output can drive without degrading its operation is called fan out. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ gate ਹੈ. This is your driver gate. This gate has two inputs, so fan in is 2. The output of this gate can drive the gates, further gates. The maximum number of gates, the output of this gate that can drive without degradation of its operation is called fan out. ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੈਨ ਆਊਟ. ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੈਨ ਆਊਟ. ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 0 ਵੋਲਟ ਹੈ. 0 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 0 ਲੌਜਿਕ. 5 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 1 ਲੌਜਿਕ, ਲੌਜਿਕ 1. 0 ਲੌਜਿਕ ਤੇ 1 ਲੌਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ 0 ਵੋਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, 0 ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ. ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ term. 5 volt is upper limit is defined 5 volt. Here we will use the minimum voltage. For low voltage we will use maximum value. For high voltage we will use the minimum voltage, minimum value. So VIL, worst case low input voltage. Low means maximum. Maximum value of input voltage which will be considered as logic 0 level. Maximum value of input voltage which will be considered as 0 logic, ਜਿਹਨੂੰ 0 level consider ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. VIH minimum. Worst case high level input voltage. High means ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਲੌਜਿਕ 1. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ VOH ਮਿਨੀਮਮ, ਵਰਸ ਕੇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਲੌਜਿਕ 1. ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. Worst case low level output voltage, this is the maximum value of output voltage which will be considered as a logic 0. Low level ਹੋਣ ਕਰਕੇ maximum value use ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. up to this we considered as a low level, means logic 0. VIL maximum, this value of maximum input voltage is considered as a logic 0. This minimum value, this is the maximum, VCC is the maximum value, minimum value that is considered as a logic 1, that is known as the VIH minimum. Similarly output ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ VOL,
This maximum value of output voltage is considered as a 0. This minimum value of output voltage is considered as a logic 1. This minimum value of output voltage is considered as a logic 1. Next term is the noise margin or noise immunity. It is the ability of logic circuit to tolerate the noise without causing any unwanted change in output. जिन्नी noise maximum tolerate कर सकता कोई भी circuit विदाउट काजिंग अनवांटेड चेंज इन आउटपुट तां जो ਉਹਦੀ आउटपुट ना चेंज होवे जिन्नी टॉलरेट कर सकदा नॉइज दैट इज कॉल्ड नॉइज मार्जन ये जिन्नी ज़्यादा होएगी नॉइज मार्जन उन्ना वधिया होएगा ਤੁਹਾਡਾ आईसी ਇਹ ਅਸੀਂ लॉजिक 0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट दैट इज कंसिडर्ड एज ए 0 दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट दैट इज कंसिडर्ड एज ए 1 दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ output that is considered as 0. This is the maximum value of minimum value of output that is considered as a logic 1. So this is your VH minima, this is VOH minima. The difference between VOH minima and VIH minima is known as high level noise margin. This is the high level noise margin. Similarly, VIL maxima and VL minima, VNL minima, maxima, इन्हां दे विच जिहड़ा डिफरेंस है दैट इज नोन एज द लो नॉइज मार्जन. हाई लैवल नॉइज मार्जन VOH मिनीमा माइनस VIN मिनीमा. लो लैवल नॉइज मार्जन VNL इज इक्वल टू VIL मैक्सिमा माइनस VOL मैक्सिमा. ठीक है. नैक्सट पैरामीटर आ जाता साढ़े को ऑपरेटिंग टैंपरेचर. इट इज़ द रेंज ऑफ टैंपरेचर असैप्टेबल फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर के लिए जी रेंज ऑफ टैंपरेचर असैप्टेबल हैगी है दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग टैंपरेचर. फॉर इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशन वी यूज 0 to 70%, 0 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर एप्लीकेशन जोड़ा इंडस्ट्रीयल यूज किया जाता जिथे आईसी मैक्सिमम टैंपरेचर 70 हो सकता तो मिनीमम कितना होता 0. फॉर मिलटरी एप्लीकेशन जेडे असी यूज करने हैं आईसी वो असी -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज करते हैं. ये साड़ियाँ सारियां सीगियां करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजिटल आईसी. ते आई विल डिस्कस दीज करैक्टरिस्टिक्स अगेन. फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इज propagation delay. The time difference between cause and effect. Time difference between cause and effect is called propagation delay. Second is the power dissipation. Every IC consume the power. Power is dissipated in the form of heat. Power is dissipated in the form of heat. That is known as the power dissipation. Power consumed by each gate is called power dissipation. Then total power is calculated by calculating the power consumed by each gate by adding the figure of merit. Product of propagation delay and power dissipation is called figure of merit. Its value should be low and it is constant. If power dissipation is decreased, propagation delay increases. So we have to compromise between the power dissipation and propagation delay. Fan in, the maximum number of inputs that the gate can have. किसी गेट दियां जिन्नियां maximum number of inputs हो सकदियां that is called fan in. Fan out, the maximum number of standard loads the output of given gate can drive. किसी गेट की आउटपुट अगे किन्ने नूं ड्राइव कर सकती है दैट इज नोन एज द फैन आउट. वोल्टेज पैरामीटर्स असी VIH मिनीमा VIH मैक्सिमा वर्स केस इनपुट वोल्टेज वर्स केस आउटपुट वोल्टेज ये साडे आ गए. नॉइज मार्जन द ability to tolerate the noise that is known as the noise margin. Then operating temperature, the range of temperature that can be
acceptable for the consumer. The range of temperature that is acceptable for the consumer, that is known as the operating temperature. For industrial application 0 degree to 70 degree, and for military application minus 55 degree centigrade to 125 degree centigrade. Thank you very much.